अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आलिया हसन फ्रॉम IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज हम चैप्टर नंबर 6 को दोबारा देखेंगे क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 6 को यूटिलाइज़ करेंगे प्रेसी राइटिंग के लिए। प्रेसी राइटिंग आपके पेपर का दूसरा टॉपिक, वो टॉपिक जिसमें आपको वही पैसेज पढ़ना है जो आपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के लिए पढ़ा, यानी कि MCQs के लिए पढ़ा, लेकिन अब आपको उसी पैसेज को शॉर्ट करके लिखना है, जैसे कि हम समरी बनाते हैं। समरी और प्रेसी एक ही चीज़ है, सिर्फ दो सिनोनिम्स यूज़ हो रहे हैं और मीनिंग दोनों का सेम है। सो लेट्स गेट टू द प्रैक्टिस सेशन। जो टॉपिक या जो पैसेज मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो आपके स्टडी टेक्स्ट में 6.1 एक्सरसाइज के नाम से यहाँ दिया गया है। 6.1 में अगर आप पढ़ें तो दिस इज़ अ पैसेज विच इज़ जस्ट अ पैराग्राफ लॉन्ग। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि समरी तो खुद एक पैराग्राफ की होती है, और अगर ये पैसेज जो एक्चुअल ओरिजिनल टेक्स्ट है वो ही एक पैराग्राफ का है तो हम इसकी समरी कैसे फॉर्म करेंगे। तो भाई द ईजीएस्ट एंड सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ दैट आपको समरी बनानी होती है एक्चुअल या ओरिजिनल टेक्स्ट की 1/4, right? So obviously when you're going to make a précis out of this passage, which is just a paragraph long, then obviously the 1/3 or 1/4 of this paragraph would be the précis, right? So you don't need to worry कि इसमें कितनी lines हैं। फिर भी अगर आपको तसल्ली करनी हो तो I'll just let you know, because बहुत सारे students होते हैं who love to understand the word count and the phrases. So ठीक है, for them it's like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So for example, if it's 10 line long passage, then how many lines do you have to write for it? So you have to write not more than 5 to 6 lines. ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस पैसेज को थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन में और ओन वर्ड्स में लिखें। अच्छा, स्टडी टेक्स्ट के एंड में आपको इस पैसेज का एक प्रेसी वर्जन मिलेगा, so you can always refer back to the book to check your answer, to reassure yourself that whether this answer is correct or it is slightly matching with the actual answer which the study text has given you. So that's a good idea. ऐसे करने से कम आपको एक तसल्ली हो जाएगी, आपको ये बात का पता चल जाएगा और आपको अपनी राइटिंग स्किल्स और अपने कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग का भी पता चलेगा। क्योंकि देखिए, आपका आंसर और बुक का आंसर अगर वर्ड टू वर्ड सेम नहीं भी है, so that's perfectly fine because you are different person and obviously book में जिसने आंसर दिया होगा that person would be a different person. But if your context यानी कि पूरे जवाब का बैकग्राउंड सेम है तो इसका मतलब है कि आंसर करेक्ट है। So you just need to focus on the background, nothing else, right? So let's read 6.1. Pakistan is currently facing financial, economic, social and energy challenges, which indicate the crucial role of government in serving the public interest regarding the service delivery and public goods. इस एक सेंटेंस से हमें एटलीस्ट ये आइडिया हो गया कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हम उन चैलेंजेस और क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, right? And also we are talking about which indicate the crucial role of government in serving the public interest regarding the service delivery and public goods, which means that the role of government and the policy making is also discussed in this passage. Let's go ahead. The state structure demands renewed attention by the government towards the institutions, policies and tools that help government to deliver what the ordinary citizens and businesses need and expect. Right? So this is also very clear कि अब हम पॉलिसी में किसी किस्म का रिन्यूअल, किसी किस्म का रिफ्रेमिंग हम चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो जो स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स हैं या जो ऑर्डिनरी लोग हैं या जो आवाम है उनको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे और वो कंटिन्यूली फेस करेंगे। ठीक है, let's go ahead. It also highlights the core areas where the government attention is inevitable and changes may be needed. अब उन कोर एरियाज को डिस्कस करेंगे वो जो जहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होना लाजमी है, और सिर्फ लाजमी ही नहीं, मतलब ये वो चीज़ें जो अनअवॉइडेबल हैं, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। लेट्स सी, गुड गवर्नेंस इज़ नॉट अ थिंग विच कुड बी हैंडल्ड इन आइसोलेशन. In particular, Pakistan needs to realize and assess its capability, that how it can improve its capacity to anticipate and manage risks and react quickly to complex problems in changing environments in the region and in the world as well.
Due to the global nature of these challenges, it is no longer feasible to act at the national level in a solitary manner, as Pakistan holds important geostrategic position. Now, when we complete it, we understand that what they are talking about. एक चीज़ होती है पैराग्राफ का स्ट्रक्चर. सबसे पहले तो मैं आज आपको बताऊंगी कि एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? So we are going to start writing Prezi definitely, but before that I want to tell you कि पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर के थ्रू हम उस पैराग्राफ में से पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उन्हें रीफ्रेम, रीफ्रेज या इवन पैराफ्रेज कर सकें. एक पैराग्राफ में सबसे पहले तो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं पॉइंट. पॉइंट क्या है? पॉइंट बेसिकली पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होता है. टॉपिक सेंटेंस यानी कि आपके पैराग्राफ की सबसे पहली लाइन, पहला स्टेटमेंट. वो स्टेटमेंट हमारे लिए एक पॉइंट क्रिएट करता है, यानी कि हमें ये बताता है कि इस पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात की जाने वाली है. पॉइंट के लिए सपोर्टिव चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होती है एक्सप्लेनेशन. अब एक्सप्लेनेशन क्या है? मज़ीद वो डिटेल्स जो पॉइंट को हमारे लिए क्लैरिफाई करें, सिंप्लीफाई करें और हमारे लिए वो चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव बना दें ताकि हमें वो बात आसानी से समझ आए. लेकिन एक्सप्लेनेशन को मज़ीद कॉम्प्रिहेंसिव या अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमें उसी पैराग्राफ में कुछ एग्जाम्पल्स या कोई एक एग्जाम्पल डालनी पड़ती है. ये बेसिकली सपोर्ट करती है एक्सप्लेनेशन को. ये होता है एक सपोर्टिव एविडेंस. ठीक है, सपोर्टिव एविडेंस यानी कि एग्जाम्पल्स हम यूज़ करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. और फिर पैराग्राफ एंड हो रहा होता है लिंक पे. लिंक बेसिकली अगर एक पैराग्राफ का कोई टेक्स्ट है तो आप लिंक को अब पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट विथ पॉइंट. और अगर 2 से 3 पैराग्राफ का कोई राइटअप है, जैसे कि कोई ऐसे है, कोई आर्टिकल है, तो वहाँ पर लिंक हर पैराग्राफ का कनेक्ट होगा सेकंड पैराग्राफ के पॉइंट से, राइट? सो सेकंड पैराग्राफ के पॉइंट से आप लिंक करते हैं अगर कोई बड़ा राइटअप है. लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ एक प्रेसी की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो लिंक यूज़ हो रहा है वो लिंक आपको कनेक्ट करेगा आपके मेन पॉइंट से, राइट? जो आपने स्टार्टिंग में दिया था. Now let's get back to that topic to understand some things in a better way और फिर हम उसे लिखने की कोशिश करेंगे. Pakistan is currently facing financial, economic, social and energy challenges which indicate the crucial role of government in serving the public interest regarding the service delivery and public good. Now, if we come back to this page and start writing about this Prezi, what do we have to write for this thing? Let's do it. So हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे is facing numerous challenges due to weak government policies and also lack of check on
implications. ये सेंटेंस हमारी आधी बात को समराइज कर देता है. अब आते हैं हम अपनी दूसरे पॉइंट की तरफ. द स्टेट स्ट्रक्चर डिमांड्स रिन्यूड अटेंशन. ठीक है, ये चीज़ भी ऑलमोस्ट इसी में जाएगी. उसके बाद है वेयर द गवर्नमेंट अटेंशन इज़ इनएविटेबल. ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कोर हैं. उसमें उन्होंने बताया है पाकिस्तान नीड्स टू रियलाइज एंड असेस इट्स capability, that how it can improve its capacity to anticipate and manage risk and react quickly to complex problems. Now let's write this in a better way. Pakistan is facing numerous challenges due to weak government policies and also lack of check on implications. It has to focus on certain areas for improvement as they are unavoidable. अच्छा, मेरी आप सबको ये सजेशन होगी कि आप कोशिश ये करिए कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट में वोकैबुलरी यूज़ हो रही है या फ्रेजेस यूज़ हो रहे हैं उन्हें कॉपी ना करें. क्योंकि देखें, जितना ज़्यादा आपका ओरिजिनल टेक्स्ट से मैच होता हुआ टेक्स्ट होगा, यानी कि आपकी प्रेसी में वही वर्ड्स होंगे, उससे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर ये देखना चाहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ना कि ये कि आप कॉपी पेस्ट कितना अच्छा कर सकते हैं. राइट, सो यू नीड टू rephrase certain sentences and also you have to change certain vocabulary into your own vocabulary. हाँ, अगर कोई ऐसा नाम है जैसे कि किसी शख्स का नाम या किसी कंपनी का नाम या किसी कंट्री का नाम या किसी पर्टिकुलर पॉलिसी का कोड या नाम, तो आपको वो एज इट इज़ लिखना है, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते. दैट्स समथिंग विच इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. तो प्रॉपर नाउन आप एज इट इज़ लिख सकते हैं. उसके अलावा आप कोई भी वर्ड मज़ीद नहीं लिख सकते. कोशिश ये करिएगा कि जितना हो सके आप सिनोनिम्स याद करें, या जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उससे मिलते जुलते अगर आपके पास दूसरे अल्फाज हैं तो आप वो यूज़ करें, ताकि आपका राइटअप जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट से मैच ना हो, बट उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेम हो. ठीक है, सो कॉन्टेक्स्ट कैन रिमेन सेम बट द टेक्स्ट हैज़ टू बी डिफरेंट, बिकॉज दैट शुड बी मोर सिंपलर एंड मोर owned by you as a writer. ठीक है, so let's get back to the work. So what we have written is that it has to focus on certain areas for improvement as they are unavoidable. Let's go back to the text. अब टेक्स्ट आपसे ये कह रहा है कि good governance is not a thing which could be handled in isolation. Okay, in particular it needs these kind of changes. ठीक है, अब ये क्या changes हैं? Let's figure it out in an easier way and react quickly to complex problems in changing environment in the regional and in the world as well. Due to the global nature of these challenges, it is no longer feasible to act at the national level in a solitary manner. Okay, so you need to understand one point which is very important here. Now this point is very simple. So in the end आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि overall Pakistan needs better networking with its neighboring countries, as no nation can succeed in isolation. Right? So आप देख सकते हैं कि हमने इस पूरे पैसेज को समराइज करके एक छोटे पैराग्राफ में चेंज कर दिया. ऑल्दो वो भी एक बड़ा पैराग्राफ ही था, लेकिन हमने उसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया. नाउ लेट्स रीड इट टुगेदर
to understand what it says. Pakistan is facing numerous challenges due to weak government policies and also lack of check on implications. It has to focus on certain areas for improvement as they are unavoidable. Overall, Pakistan needs better networking with its neighboring countries as no nation can succeed in isolation. Now this is something which is covering every point over there. Now बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत सी ऐसी डिटेल्स थी जो मैंने वहाँ नहीं शो की. So let me tell you one thing. Prezi is not about details. Prezi is all about the content points, the main idea of the whole passage which you are reading. So if you can figure out that main idea in your write-up, then you get the points, okay? And also the other criteria, or you can say the next thing which they are going to assess is your language skills, that how correctly you have made sentences and how efficiently you change the vocabulary used in the original text. ठीक है, तो अब हम इसी के साथ करते हैं 6.2. 6.2 एक मज़ीद छोटा राइटअप है. तो 6.2 के लिए जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है समझना वो ये कि मैं आपको सिर्फ एक प्रेसी लिखने के आइडियाज़ दे रही हूँ. आई एम नॉट आस्किंग यू कि पेपर में आपको इतनी ही छोटी किसी टेक्स्ट की प्रेसी लिखनी होगी, लेकिन अगर आपको इनकी प्रेसी या इनको समराइज़ करना या इसमें से मेन पॉइंट्स ड्राइव करना आ जाएगा तो आप बड़े पैसेजेस को भी बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं और उनकी आप प्रेसी डेवलप कर सकते हैं. सो लेट्स गो बैक टू 6.2. नाउ व्हाट इज 6.2 बेसिकली? Extract key idea from the following paragraph. Now this is the easiest task you can see in your book, which is very good for practice, not only for the new students, also for the previous students who want to polish their summary writing skills. इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ वो ये है कि ये जो छोटे छोटे से 2 पैराग्राफ इन्होंने यहाँ आपको 6.2 में बनाकर दिए A and B, ये आपको सिर्फ वो चीज़ सिखा रहे हैं जो प्रेसी का मेन जिस्ट है, वो है मेन कंटेंट पॉइंट एक्सट्रैक्शन. सो वो आपसे कह रहे हैं कि इसमें से आप वो मेन आइडियाज़ एक्सट्रैक्ट करें जिस पर ये बात की गई है. सो लेट्स चेक इट. Now remember that the size of this paragraph is not more than 6 lines. It's even 4 to 5 lines. So if this short is the original text, then how long would be your presi? Definitely 1 से 2 line. 1 से 2 line की आपकी presi होगी and then that's it for you. So let's read 6.2a. Your best decisions and most successful strategic initiatives are co-created by the talent within and around your organizational ecosystem. That's because when all the right people have a hand in making choices and developing strategies, you're going to get better solutions. And when people have co-created the way forward for the organization, they are far more likely to believe, align, and commit to the resulting actions. So now you can see easily this is your main key idea, like the topic sentence, which is all about that the best decisions or the successful decisions can be taken as a teamwork, right? That's because when all the right people have a hand in making. Okay, so let's write something about it. 6.2a. Team spirit is the key to success. If all the people working in an organization work with the same team spirit, then they can
create success. Now this is all about the second paragraph, because it says that no success can be achieved in isolation, and if you work in a team, and if you know how to take decisions, the best, एक line add कर लेते हैं, the best decisions have been made collaboratively. Right, so that's all about 6.2's A, because अगर आप देखें तो उसमें यही आइडिया है कि team spirit is the key to success. If all the people working in an organization work with the same team spirit, then they can create success. The best decisions have been made collaboratively, which means सब मिलकर जब एक decision लेते हैं, so that's the best decision because everybody agrees on it and nobody is going to create any kind of conflict against it. So that's all in 6.2A. Now let's move to 6.2B. Right, so I'm going to read it out for you first so that you will grasp the idea out of it. अच्छा, ये ज़रूर याद रखिएगा, बुक में आपको हमेशा हर पैसेज या हर आइडिया के बाद एक छोटा सा एक्सट्रैक्टेड फॉर्म करके एक इटैलिसाइज्ड टेक्स्ट नज़र आएगा. ये टेक्स्ट बेसिकली आपको ये बताता है कि ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट आपने अभी पढ़ा, जिसकी समरी या प्रेसी आपने बनाई है, उसमें से मेन पॉइंट एक्सट्रैक्ट किया, ये किसी लंबे या लेंदी टेक्स्ट में से लिया हुआ एक छोटा सा एक्सर्प्ट है. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग. अगर आप रेफरेंसिंग स्टाइल देखें तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना एक ना सिर्फ एक अनएथिकल चीज़ है बल्कि कानूनन जुर्म भी है, बिकॉज के इफ़ यू हैव टेकन somebody's writing or work, then you need to address or refer to that particular person's writing or that book, so that वो चीज़ आपके नाम से ना आए और लोग समझ सकें कि वो ओरिजिनली कहाँ से लिया गया है. Right, so let's go to B. Now B says it's difficult to make predictions, especially about the future. So it's about unpredictability of future. But one fairly safe prediction is that data will continue eating the world in 2020 and the coming decade. Now this is important. The most important tech trend since the 1990s will no doubt accentuate, which means accelerated, its presence in our lives, for better or for worse. The constant increase in data processing speeds and bandwidth, the non-stop invention of new tools for creating, sharing, and consuming data, and the steady addiction of new data creators and consumers around the world ensure that data growth continues unabated, unstoppable. Data begets more data in a constant virtuous cycle. Now this is all about data, right? ये तो हमें पहले ही समझ आ गया, लेकिन इसमें बात क्या हो रही है? Let's do that. सो अब हम 6.2 का एक पॉइंट एक्सट्रैक्टेड वे में लिखेंगे जो हम अभी तक देखते आए हैं. सो लेट्स राइट 6.2b. सो इट्स ऑल अबाउट data and how data is actually consuming everything. So you can simply write data is consuming the world at a very high speed. Right? Data is consuming the world at a very high speed. It is everywhere in our surrounding, and it is hard to avoid its consequences
in future. So I think that's it, because इसमें आपको एक ही सेंटेंस में ये बात समझ आ गई कि डेटा इज समथिंग विच इज़ कंज्यूमिंग वर्ल्ड एट अ वेरी हाई स्पीड. इट इज़ एवरीवेयर इन आवर सराउंडिंग एंड इट इज़ हार्ड टू अवॉइड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज इन फ्यूचर, क्योंकि उसमें यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से डेटा हमारी हर चीज़ को कंज्यूम कर रहा है और अब आप उसके बगैर कुछ नहीं सोच सकते. प्लस इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ वेरी unpredictable time for us, because its predictability is actually ironically changing the future at a very fast pace, which is something beyond our reach, beyond our control as well. तो ये सारी चीज़ें, ये सारे आइडियाज़ इसमें हैं. अगर आप इन दोनों के आंसर्स टैली करना चाहें तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से टैली कर सकते हैं. देन यू विल फाइंड that the context same. The only thing which is different is the wording, because obviously यहाँ मैंने अपने words use किए हैं, इसको मज़ीद simplify करके बताया है, और book में कुछ चीज़ें different तरीके से बताई गई हैं, लेकिन उसका context और मेरा context same है. So I hope कि आपको आज की क्लास में समझ आया होगा कि प्रेसी राइटिंग क्या होती है और किस तरह की जाती है. एक क्विक रिकैप में मैं आपको बता दूं कि पैराग्राफिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ राइटिंग स्किल्स. अगर आपको पैराग्राफ बनाना आ गया या उसका स्ट्रक्चर एक बार समझ आ गया, जो मैंने आज आपको एक बड़ी ही आसान एक्रोनियम के थ्रू समझाया है, एंड दैट एक्रोनियम इज़ PEEL. So agar if you remember PEEL all the time when you are making any kind of paragraph, whether it's an independent paragraph or it is connected to other paragraphs, all paragraphs should have this PEEL structure. If you have this PEEL structure in your writing, then it means that you have written a very good paragraph. So point, explanation, example and link should be the part of your writing. Thank you so much.